Hi everyone. This is the sixth lecture for your chapter Chemical Control and Coordination, and also it is the first lecture for your chapter Human Reproductive System. Fine, we will be studying these together as I already mentioned in the last class. Before we may begin, let us just discuss sexual dimorphism in humans, specifically focusing on the external sexual dimorphism. Dimorphism is difference. Okay, so sexual difference between the male species and the female species is known as sexual dimorphism. As you may have already seen, even in other animals you have the same. For example, just think of peacock and peahen, more and a tail. If you think of them, then there also you find sexual dimorphism. Then think of lion and lioness. Okay, singh and a sinhan. In both of these also you find sexual dimorphism. Same way, even in humans we have external sexual dimorphism which determines the sex of that specific individual. Here it is important for you to understand the difference between sex and gender. Sex और gender जो है वो दोनों अलग चीजें हैं. Sex is related to biology, है ना? Biologically either you can be a male or you can be a female. लेकिन जेंडर जो है इट इज नॉट बेस्ड ऑन सेक्स. जेंडर इज योर आई मीन यू कैन डिसाइड इट. ओके, कि कई बार ऐसा होता है कि somebody who is biologically male but feels like a female, then these kind of people are called transgender. The opposite is also true. For example, somebody who is female biologically but feels like a male, then that person will be known as a transgender, right? So apart from this male and female, genders can be non-binary. जो आपने शायद पढ़ा हो LGBTQIA+ जितने भी अलग अलग वेराइटी है, वेरिएशन है ना? सो दे कैन बी डिफरेंट. बट सेक्स, सो बायोलॉजिकली जो अलॉट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, दैट इज सेक्स. ओके, सो इट कैन आइदर बी मैन or it can be woman. So discussing this external sexual dimorphism in humans, these are the characters on the left column, and in man and woman what are the specifics. Okay, so general build up मतलब कैसा मसल वसल है कि नहीं है, build कैसा है. Okay, so in man the men are mostly muscular. ठीक है ना? The testosterone hormone, which is male reproductive hormone, it has this function of making men more muscular. Fine. So men are just more muscular compared to women who are comparatively less muscular. Then the second character is aggressiveness. So aggressiveness is more in men and less seen in women. Hair growth. So in men there is hair growth all over the body. Okay, including the face, including chest area, back, as well as the axillary hair. Axillary hair are armpit hairs. Okay, and pubic hair means near the external genitalia there is presence of hair. So all over the body in male you find hair, while in female mostly the skin is quite smooth and comparatively less hairy. Okay, there are only few places which are hairy. For example, axillary hair meaning armpit hair, and pubic hair meaning the hair near external genitalia. Clear? Apart from that, when we are talking about hair, then women normally have longer hair on the head. Fine. The fourth character and the special character for mammals is mammary glands. So mammals जो होते हैं उसका एक special जो खासियत है, that is mammary glands. Okay, which are present in both sexes. They are present in male as well as in female. But in male they are vestigial. Vestigial मतलब है लेकिन कोई काम के नहीं है. Okay, they have lost their function. So in men also you can see the nipples, but they are mammary glands. Okay, they are not functional. They cannot produce milk. In women they are well developed, and they can synthesize milk for nourishment of young ones. So for nourishment of babies, milk is synthesized in the mammary glands. Then you have shoulder और योर पेक्टोरल गर्डल. जो शोल्डर का पूरा गर्डल बनता है उसको पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं.
तो इन मेन इट इज क्वाइट ब्रॉड, है ना, एकदम चौड़ा जो बोलते हैं, तो शोल्डर्स आर क्वाइट ब्रॉड, while in women the shoulders are comparatively less broad. मतलब आप अगर कोई जो भी है 20 साल का आदमी ले लो और 20 साल की महिला ले लो, तो दोनों के बीच में द एज विल बी सेम, लेकिन when you compare, no, the shoulders will be broader for the men and it will be less broad for the women. Then talking about the pelvic girdle या pelvis, तो pelvis की अगर आप बात करते हो, pelvis का मतलब होता है कमर, है ना, कमर के पास का जो बोन होता है, तो वो pelvic girdle. तो pelvic girdle की बात करो तो in men it is narrow. Okay, तो men जो है they look like a little bit of inverted triangle, है ना, इस तरीके से होता है उनका broader shoulder and narrower waist, while women are quite the opposite, they have narrower shoulders and broader waist. ठीक है, so pelvis is narrow in men and it is broader in women. ठीक है, and this is also why sometimes in what you can say, symbolism, these uh, triangles are used, okay, to distinguish men and women. Okay, chalo. Then next thing is Adam's apple. Adam's apple मतलब गले में आपने देखा है कभी जो मेन होते हैं उनके गले में कोई राउंड ऐसे दिखता है ना, मार्बल जैसा जो ऊपर नीचे जाता है when you swallow, right? So that is known as Adam's apple. और वो एडम्स एप्पल और कुछ नहीं है, वो लेरिंक्स है, लेरिंक्स, ओके, योर वॉइस बॉक्स। तो उस जगह पे वॉइस बॉक्स होता है, उनके वोकल कॉर्ड जो है इन मेल दे आर अ लिटिल डिफरेंट, दे आर अरेंज्ड डिफरेंटली, तो इस वजह से वो बाहर ऐसे निकल के आता है, विच इज नोन एज एडम्स एप्पल। गले के पास आपने देखा होगा एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो मेन में विजिबल होता है, विमेन में विजिबल नहीं होता है। So this Adam's apple is nothing, it is just your voice box. Then comes voice, आवाज। तो in men there is baritone voice. Baritone का मतलब होता है low pitch, है ना, एकदम ऐसे thick voice, heavy voice. So that is known as low pitch. और women का आवाज जो होता है that is sharper, right? So it is high pitched. When talking about the BMR, BMR is basal metabolic rate. So basal metabolic rate is higher in case of men and it is comparatively lower. मतलब low नहीं बोल सकते आप, लेकिन compare करोगे तो low मिलेगा, इस हिसाब से comparatively low in case of women. तो ये थोड़े external sexual dimorphism के characters हो गए या basic dimorphism characters हो गए. There are some internal sexual dimorphisms also, anatomy wise या फिर hormone के हिसाब से आप बोलो तो that all we will be studying when we study all of the systems. Okay, जैसे कि अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको उसमें से पता लगता जाएगा कि क्या क्या चीजें men and women में common है and what is different in case of men. Clear? So that internal sexual dimorphism will be studied uh, throughout during this whole chapter. Starting with the first and foremost male reproductive system. In male reproductive system, we will be studying the anatomy of the male reproductive system. Then we will be discussing the gametogenesis, जो specifically men के लिए it is known as spermatogenesis. Then we shall also be discussing the endocrinology part, right? Because that is what we were doing in the beginning, right? That is what we started with. So endocrinology part where we will be studying different hormones, and specific male reproductive hormone or male sex hormone is testosterone. So we'll be focusing on testosterone more. So these are the three brief parts which we shall discuss. Starting with the male reproductive system's anatomy. The male reproductive system is located in the pelvis region. Okay, pelvis, I told you, it is the waist. So it is present in the pelvis region. It includes, now what all things are included in a male reproductive system? So it includes a pair of testes. If you are writing it singular, then you write I, testis. And if you are saying plural, so two, then you write E, so testes. Then accessory glands and accessory ducts. There are few ducts which are present which help in carrying the sperms. These are known as accessory ducts. And there are certain glands which secrete the seminal fluid.
which are known as accessory glands. Okay, they help. These accessory means what? It means secondary or extra. Okay, basically accessory means extra. They will not be responsible for generation of any gametes. है ना, वो sperm वर्म का कोई जनरेशन नहीं करता, बट वो क्या काम करता है? इट इज हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द स्पर्म. वो जब स्पर्म को मूव करना है या कोई भी ऐसी प्रोसेस है विच इज हेल्पिंग इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल्स, देन इट इज नोन एज एसेसरी. ठीक है, तो जैसे एसेसरी ग्लैंड्स हो गए, वो ऐसा फ्लूइड सिक्रीट करेंगे विच विल हेल्प द स्पर्म in movement, it may help in lubrication, it will help in न्यूट्रिशन. ठीक है, फिर डक्ट्स आ गए. तो डक्ट्स जो है, दीज आर नथिंग बट ट्यूब्स, जिसमें से पूरा जो आपका ये स्पर्म्स है, दे विल बी मूविंग. ठीक है, and then of course you have external genitalia. External genitalia helps in the sexual act. Okay, in insemination, which is transfer of sperms from male reproductive system to female reproductive system. So for that you require external genitalia. तो ये तीन या चार चीजों से बनता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. The testes are situated outside the abdominal cavity. ये जो testes है, they are present outside the pelvic cavity. ठीक है, why are they present outside? Because the spermatogenesis, okay, it requires 2 to 2.5 degrees less temperature. उसको 2 से 2.5 डिग्री तक कम तापमान चाहिए होता है for spermatogenesis. So that is why it is located outside the body. ठीक है, अभी एक बात जो मैंने इधर नहीं मेंशन की, because it is not in your syllabus, but if you ever find it, then in a fetus, fetus मतलब बेबी है ना, जब ये वो fetus होता है, बेबी होता है, तो in that baby it has two types of इधर let me first draw. Okay, it has two types of ducts. ये दो टाइप की duct होती है. Here you have red colored one and black colored one, है ना. तो ये समझ लो, ये रेड कलर वाली जो है उसको बोलते हैं मुलेरियन डक्ट. मुलेरियन डक्ट. और जो ब्लैक कलर वाली है उसको नाम देते हैं वुल्फियन डक्ट, है ना, वुल्फियन डक्ट. तो बेबी जो होगा उसके पास ये दोनों चीजें होती है. ओके, इन फीटस, नॉट इवन बेबी. फीटस मतलब अभी जब वो यूटेरस में, वूम्ब में ग्रो कर रहा है ना, इट इज नॉट कंप्लीटली रेडी. तो उस समय पे यू हैव दीज टू डक्ट्स. अभी टेस्टोस्टेरॉन बनेगा कि नहीं बनेगा? टेस्टोस्टेरॉन बनेगा तो मुलेरियन डक्ट जो है, फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल फॉर्म. ठीक है, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म होगी और टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आके लोकेट होंगे. इफ लेट अस से that testosterone is not produced, in which case the Wolffian duct, okay, it will be forming the female reproductive system. तो इसलिए कभी कभी क्या हो जाता है कि इफ देर इज सम डिफेक्ट इन सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, अगर बच्चे का टेस्टोस्टेरॉन नहीं सिक्रीट हो रहा, देन इवन दो जेनेटिकली द पर्सन इज मेल, लेकिन उसका टेस्टिस जो है वो डेवलप नहीं होगा. इट विल नॉट कम आउटसाइड द बॉडी, है ना. सो फ्रॉम आउटसाइड द पर्सन विल लुक फीमेल, लेकिन जेनेटिकली द पर्सन मे बी मेल. सो दिस कैन ऑल्सो हैपन. तो छोटा बच्चा जो होता है जब भी फीटस के फॉर्म में होता है, देन इट इज नॉट डिसाइडेड विच रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल बी डेवलप्ड. आफ्टर अ सर्टेन टाइम, जब बेसिक टेस्टिस डेवलप हो जाते हैं, दे स्टार्ट सिक्रेटिंग टेस्टोस्टेरॉन. दिस टेस्टोस्टेरॉन विल हेल्प इन फॉर्मिंग ऑफ दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और उस हिसाब से ये टेस्टिकल जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आके एक स्क्रॉटल सैक होता है. स्क्रॉटल सैक इज लाइक अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, है ना. तो थैले जैसा होता है जिसके अंदर यू कैन फाइंड द टेस्टिकल्स. राइट, सो इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि इट शुड बी प्रेजेंट आउटसाइड. व्हाई? बिकॉज spermatogenesis takes place at 2 to 2.5 degrees Celsius lower temperature compared to your body temperature. The testes are withdrawn towards pelvis when the temperature in the surrounding drops. अभी इसके साथ मसल्स और बहुत ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू भी अटैच्ड होते हैं विद द टेस्टिस. सो वेन एवर देर इज एनी कोल्ड, है ना, बाहर ठंडी होती है, तो एट दैट टाइम
this testis, it can be brought back a little bit closer to the abdominal cavity. इस हिसाब से उसको बॉडी में से हीट मिलती रहेगी and it will not become extremely cold. तो it can move up and down. ठीक है. In adults, each testis is oval in shape. Oval shape में होती है testes, and the length is about 4 to 5 centimeter, and the breadth or the width is about 2 to 3 centimeter. The testis is covered by a dense covering. उसको एक dense covering से cover किया जाता है. So this covering also, it has 3 layers. ठीक है ना. ये आपको ऐसा डिटेल में कभी मतलब पूछा नहीं है, but if you want to know, then these 3, okay, they are called as tunica. Tunica का मतलब होता है cover. And you have 3. The outermost is known as vaginalis. Vaginalis का मतलब होता है बाहर का, है ना. फिर albuginea, जो ये आपको white कलर का दिख रहा है ना, that is fibrous coat known as albuginea, tunica albuginea. And innermost will be tunica vasculosa. ये vasculosa is important. I will show you why. Each testis is has about 250 compartments called testicular lobules. तो भी समझ लो. This here is your tunica albuginea, white color वाला, and inside the tunica albuginea is your tunica vasculosa. ये vasculosa जो है ना, वो ऐसे folds में होता है, and each of these folds it forms one lobule. तो ये एक एक lobule बनाते जाएगा. तो इस तरीके से कंपार्टमेंट्स होते हैं, लॉब्यूल्स होते हैं कितने, 250 इन ईच टेस्टिस. ठीक है. तो ये टेस्टिस में कंपार्टमेंट बनाने का काम कौन करता है? द फंक्शन इज डन बाय ट्यूनिका वास्कुलोसा, व्हिच इज अ कवरिंग ऑफ टेस्टिस. नाउ ईच लॉब्यूल, अभी हर एक लॉब्यूल के अंदर देयर आर 3 coiled seminiferous tubules in which the sperms are produced. अभी हमने बात की कि हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 testicular lobules होते हैं. So in each of these lobules there will be 3 seminiferous tubules. Lobule के अंदर tubule, and these seminiferous tubules produce sperm. So here you can see, ये cross section में आपको दिखाया है, and each of these are showing a lobule. ये एक पूरा lobule है, और lobule के अंदर आप अगर देखो तो आपको ये ट्यूब जैसा दिख रहा है ना, straw जैसा. तो ये हर एक जो है, there are 3 such kind of tubes, and each one of them is known as seminiferous tubule. ठीक है, seminiferous tubule. Seminiferous tubule का अगर आप काट के देखो तो it has the germinal epithelium. इधर जर्म या जर्मिनल का मतलब बैक्टीरिया या वायरस नहीं होता है ना. इधर जर्म का मतलब होता है जहां से गैमेट बनेंगे. ठीक है. सो दैट इज नोन एज जर्मिनल. तभी ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल का आपने क्रॉस सेक्शन लिया, काट के देखा, तो यू विल फाइंड ऑन द इनर साइड दिस जर्मिनल एपिथेलियम इज प्रेजेंट. ठीक है. तो ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है, इट हैज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. दे आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स. ठीक है. स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स, तो ये 2 टाइप के सेल्स होते हैं इन योर जर्मिनल एपिथेलियम. स्पर्मेटोगोनिया, दे अंडरगो मियोसिस. हमने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा, तो मियोसिस जो है वो स्पर्मेटोगोनिया में होंगे. ठीक है. सो मियोसिस विल टेक प्लेस इन स्पर्मेटोगोनिया, लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन. तो इस हिसाब से स्पर्म जो है वो फॉर्म होगा. सर्टोली सेल्स, अभी स्पर्मेटोगोनिया का बात हो गई, स्पर्म की बात हो गई. देन व्हाट डू सर्टोली सेल्स डू? दे आर ऑल्सो नोन एज नर्स सेल्स. ठीक है. वो क्या काम करते हैं? तो वो स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे. सो दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, एंड ऑल्सो दे सिक्रीट अनदर प्रोटीन. वो ये जो भी जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनिया आर वन एंड द सेम. ठीक है. एक बार ये बात समझ लो, जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया ये एक ही चीज होती है. ठीक है. जर्म लाइन जीन थेरेपी ऐसा आता है ना आपको इसमें, कहाँ, बायोटेक्नोलॉजी में. ठीक है. तो वो जर्म लाइन जीन थेरेपी मतलब इस जगह पे जीन थेरेपी अगर आप करते हो, स्पर्मेटोगोनिया में जीन थेरेपी अप्लाई करते हो, तो उसको जर्म लाइन जीन थेरेपी बोलते हैं. ठीक है. राइट. सो सर्टोली सेल्स दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया. और दूसरी बात वो क्या करते हैं? दे सिक्रीट अ प्रोटीन.
तो इसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अगर आपको याद हो तो एंड्रोजन वी हैव स्टडीड इन एड्रीनल कॉर्टेक्स, और एंड्रोजन का मतलब होता है मेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन जो है उसका नाम पे से आपको मीनिंग पता चल जाएगा। इट डज व्हाट, इट बाइंड्स टू द एंड्रोजन्स। तो वो एंड्रोजन को बाइंड कर करके अपने ऊपर टेस्टोस्टेरोन को कॉन्सेंट्रेट करेगा, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स क्या करता है? फर्स्ट थिंग इट इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, सेकेंड थिंग वो अपने आसपास इट इज सिक्रेटिंग दिस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन which will concentrate testosterone around spermatogonia. तो स्पर्मेटोगोनिया के आसपास ही टेस्टोस्टेरॉन पड़ा रहेगा, ओके। The regions outside seminiferous tubules are called interstitial spaces. इंटरस्टिशियल, जहां पे भी इंटर आता है आप एक बात लिख लो कि इंटर का मतलब होता है बीच में, ओके, बिटवीन समथिंग। सो इंटरस्टिशियल स्पेसेस बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस में होते हैं सेल्स, उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम है लेडिग सेल। एंड इसके अलावा, ये लेडिग सेल के अलावा, यू ऑल्सो फाइंड ब्लड वेसल्स इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो चलो अभी हम ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और उसका क्रॉस सेक्शन स्टडी करेंगे। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यू कैन फाइंड द जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है, इसको एपिथीलियम बोलेंगे। सो दिस इज द जर्मिनल एपिथीलियम वेयर यू कैन फाइंड स्पर्मेटोगोनिया। ये थोड़े क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, ठीक है। सो दीज आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया इन प्लूरल। सिंगुलर की बात करें तो स्पर्मेटोगोनियम। तो ये हो गया आपके स्पर्मेटोगोनियम। अपार्ट फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम हमने बोला था कि द सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स। तो ये हो गए आपके सर्टोली सेल्स, जो बीच में दिख रहे हैं थोड़े इलोंगेटेड है। तो दीज आर द सर्टोली सेल्स। दे विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग स्पर्मेटोगोनिया। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर आप देखो तो यू कैन फाइंड द ब्लड कैपिलरीज विच प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू जर्मिनल एपिथीलियम। और इसके अलावा ये जो छोटे छोटे सेल्स आपको दिख रहे हैं, these cells are known as Leydig cell, ठीक है। तो 3 types of cells we have studied so far. You have studied spermatogonium or germ cell, you have studied Sertoli cell and Leydig cell. This is just another diagram of the same thing. You can see here the spermatogonium, then different stages of the sperm production, and finally these are the sperms, okay, mature sperms. तो ये जो है राइट हैंड साइड पे, दैट इज योर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। यू स्टार्ट विद द जर्म सेल एंड द जर्म सेल व्हेन इट ग्रोज इन साइज, ये जर्म सेल जो होता है वो बहुत छोटा होता है साइज में। सो व्हेन इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिशन एंड इट ग्रोज इन साइज, यू कॉल इट स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। अब ये स्पर्मेटोगोनियम जो है इट विल अंडरगो माइटोसिस। तो ये माइटोसिस अंडरगो करेगा एंड इट विल create a lot of such spermatogonia. ये एक बात स्पेशल है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, लिख लो या समझ लो, ठीक है। इधर स्पर्मेटोगोनियम जो है इट कैन डिवाइड माइटोटिकली, वो माइटोसिस से बहुत ज्यादा स्पर्मेटोगोनियम बनाएंगे, ठीक है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्पर्मेटोगोनियम। फ्रॉम दिस स्पर्मेटोगोनियम अभी इट विल अंडरगो ग्रोथ। आफ्टर दिस ग्रोथ इट इज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, वो रेडी हो रहा है अभी मियोसिस के लिए। तो फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम व्हेन इट ग्रोज इन साइज इट इज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मियोटिक डिवीजन 1। मियोसिस याद कर लो 2 बार होता है, राइट। यू हैव मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सो आफ्टर मियोसिस 1 you have 2 haploid cells. Each haploid cell is known as secondary spermatocyte, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का एक बार और जो सेकेंड मियोसिस है, सो दैट सेकेंड मियोसिस डिविजन विल टेक प्लेस एंड यू गेट 4 हैप्लॉइड सेल्स। ये पूरा एक मियोसिस का साइकिल है, ठीक है ना, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में से जब 2 सेल बनेंगे तो these are known as spermatids. Spermatids जो है they will undergo a lot of differentiation, उसमें बहुत ज्यादा changes आएंगे
and these changes then lead to formation of a mature sperm, जो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है. ठीक है. So once again, if you want to write it down or if you are noting it down, this one is a better diagram to understand. Clear? You start with a primary germ cell. ठीक है. You are starting with a primary germ cell. This germ cell will multiply with help of mitosis. इसमें से mitosis होगा. Mitosis होगा तो it is equational division. You get same type of cells. ठीक है. तो प्राइमरी जर्म सेल का जब भी माइटोसिस होगा तो द सेल्स प्रोड्यूस्ड आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, तो इसको डिप्लॉयड बोलेंगे. ठीक है. So this is the multiplication stage where you are just multiplying the spermatogonia. ये spermatogonia जो है it can also keep on multiplying. ठीक है. Fine. Now let us say this specific spermatogonia has decided to undergo meiosis. तो क्या होगा? ये meiosis होने से पहले this spermatogonia will absorb a lot of nutrition and it will grow in size. It will become ready for meiosis. ठीक है. तो ये इंटरफेज के टाइम पे इट विल ग्रो इन साइज. आफ्टर ग्रोइंग इन साइज इट इज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है. ग्रोथ से पहले स्पर्मेटोगोनिया, ग्रोथ के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. आफ्टर इट हैज ग्रोन इट अंडरगोज फर्स्ट मियोटिक डिविजन. उसका मियोटिक डिविजन होता है. राइट. मियोसिस हैज टू पार्ट्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. तो मियोसिस 1 विल टेक प्लेस. Meiosis 1 में ही you get haploid cells. ठीक है. So here you have haploid cells which are known as secondary spermatocyte. तो देख लो आपने 2x में से x सिर्फ लिखा हुआ है. Right. So from 2x or diploid cell it becomes haploid cell. अभी इसका second meiotic division होगा. After the second meiotic division you have 4 haploid cells. And 4 haploid cells are known as spermatids. Spermatids जो है वो भी आपको spherical दिखेंगे. They will undergo certain differentiation, okay, and उसके बाद you get sperms which are somewhat like this. Let us understand the structure of sperm. So the sperm, it is a microscopic structure, okay, it is a microscopic cell composed of head. तो ये जो ऊपर का region है that is known as head. Then you have a neck and you have a middle piece. Okay, neck is this much, middle piece is this much, and you have a tail. तो इतने region से बनता है head, neck, middle piece and tail. Plasma membrane envelops the whole body of the sperm. जो plasma membrane है वो कई लोगों को लगता है कि सिर्फ इधर ही present होगा head के ऊपर. ऐसा नहीं है. The plasma membrane covers the whole sperm. Okay, ये पूरे sperm के ऊपर आपको plasma membrane दिखेगा. That is why you can see this pink colored layer on whole of the sperm. The sperm head, this part, it contains nucleus, okay, which is elongated. Round नहीं होता है, वो थोड़ा लंबा हो गया होता है. तो it is elongated nucleus and it is haploid in nature. Okay, it only has one set of chromosomes. The anterior portion is covered with a cap. ये cap जैसा structure होता है जिसको बोलते हैं acrosome. Acrosome is actually made up of Golgi body. ठीक है. वो modified Golgi body है and it is filled with enzymes. इसके अंदर इतने ज़्यादा enzymes होते हैं which help in fertilization and till reaching the ovum. ठीक है. egg cell की तरफ पहुंचने के लिए जो भी requirement होती है, all of those enzymes are present here. After that you have a small neck. neck में कुछ खास नहीं होता, you just have one centriole. ठीक है ना. ये छोटा सा आपको जो दिख रहा है तो वो उधर एक centriole होता है. centriole में से निकलेंगे tail के अंदर के ये चीज microtubules. ठीक है. तो microtubules जो है tail के अंदर they are actually synthesized by centrioles. The middle piece possesses numerous mitochondria. ये जो आपको बीच में दिख रहे हैं तो they are spiral shaped mitochondria. अभी अगर आपको tail की movement करनी है तो you will require ATP. तो ATP बनाने के लिए भी आपको कुछ चाहिए होगा.
So for synthesis of ATP, mitochondria are present, which produce energy for the movement of tail that facilitate the sperm motility. ठीक है, motility का मतलब होता है movement हो पाना. So this sperm motility is maintained by your mitochondria. The human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus. Coitus का मतलब होता है sexual act या जिसको आप intercourse भी बोलते हो. So the same, okay, just a more biological term is coitus. So during the process, the human male can ejaculate about 200 to 300 million sperms. Why are there so many in number? कभी सोचा है आपने? Why are the sperms so many in number? And when we will study the female reproductive system, or you may already know that ovum is only one. Okay, एक ही ovum produce होता है, while the sperms are produced in millions. The reason is because they are very small in size. They are very tiny. ठीक है ना, बहुत छोटे होते हैं, साइटोप्लाज्म इतना है नहीं, और पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितने तो खत्म हो जाते हैं. Okay, before they can reach the egg cell, a lot of the sperm they die. So they should be released in a higher number. So ज़्यादा नंबर में अगर रिलीज करते हो तो ही कुछ जो रेशियो है या कुछ परसेंटेज है, they will be able to actually reach, right? So this is the reason. Second thing, अभी उनके पास आँख तो है नहीं, है ना, आँखें तो है नहीं, तो उनको कैसे पता किस डायरेक्शन में जाना है, करना है. So a lot of times they even get what you can say diluted, or they get lost a little bit, ठीक है ना, during the journey. So they are released in millions of number. From this number, for normal fertility, अभी जो male fertility है, sometime also referred to as virility, ठीक है. I think I have mentioned this term virility before. हम लोग जब virility की बात कर रहे थे, adrenal virility, where in females excess testosterone is produced, right? So in males, fertility is known as virility. So for a fertile male, at least 60% of sperms must have normal shape and size. अब इसमें shape and size में भी you can see a lot of variation. Okay, so at least 60% should be normal in shape and size, and out of the 100%, at least 40% should show vigorous motility. मतलब ऐसे motility जो होनी चाहिए वो vigorous, they should be very active, at least 40% for the male to be called fertile. So here you can see this is a microscopic video where you can see the sperms are moving. Okay, their tail are moving in this spiral motion, and that is how the sperm can move ahead. Fine. At least 40% of them should be able to run, and then only you can call a male fertile. Right. Now coming to our endocrine section. Okay, we have seen the male anatomy till here. The rest of the anatomy we will continue, don't worry. We have also seen spermatogenesis. From spermatid, when you synthesize sperms, that part is known as spermiogenesis. Okay, so spermatogenesis, spermiogenesis. We also saw the structure of sperm. Fine. Now, who is regulating all of these functions? That we will study in this endocrine regulation. So, spermatogenesis, it starts at puberty. Puberty is around 12 to 14 years of age. Okay. Why at puberty? So, because around this year or this age, the hypothalamus, okay, which is part of your brain, it will start secreting an hormone which is known as gonadotropin releasing hormone, GnRH. We have already mentioned GnRH while discussing hypothalamus. Fine. So here you can see hypothalamus, which now starts secreting GnRH after 12 or 14 years of age. What will this GnRH do? GnRH will go to the anterior pituitary and cause the release of FSH and LH. FSH is known as follicle stimulating hormone. LH is known as luteinizing hormone. LH will go to the Leydig cells. Now remember the Leydig cells which are present outside the seminiferous tubule in the interstitial space, right?
So they were also known as interstitial cells. Okay, so these are the Leydig cells. It will, this LH, which is shown here in orange triangles, this will go and bind to the receptor on Leydig cell. This will stimulate the Leydig cell to secrete testosterone. Clear? So how do you remember which hormone is regulating what? Simple. Remember LL. Okay? LH, Leydig cell. LL, luteinizing hormone affecting Leydig cell. Clear? Now there will be release of this testosterone. That is the one part. The second part is FSH. So FSH, it acts on the Sertoli cells. What do these Sertoli cells do? They stimulate spermatogenesis. How do they stimulate spermatogenesis? अभी Sertoli cells के पास ऐसा special क्या है? So the special thing they have is androgen binding protein. क्या करेंगे ये Sertoli cells? They will start secreting this androgen binding protein. This androgen binding protein will absorb all of this testosterone. जो ये Leydig cell produce कर रहा है, वो testosterone को concentrate करके ये स्पर्मेटोगोनिया के आसपास रखने का काम आपका Sertoli cells करेगा. So now this testosterone, okay, in turn it will stimulate the spermatogenesis. ये स्पर्मेटोगोनिया के आसपास जब टेस्टोस्टेरॉन होगा तो it will get the signal to start gametogenesis or spermatogenesis. तो इस हिसाब से during puberty, okay, and after puberty till death, male में till death, this whole spermatogenesis will continue and this whole pathway will continue. ठीक है? GnRH from hypothalamus, GnRH will go to anterior pituitary. Anterior pituitary will release two hormones called FSH and LH. LH जो है, that will go and stimulate your Leydig cell. How to remember? I told you LH or LL याद रखो, Leydig cell or LH. There is also a second name for this LH if you remember, right? Interstitial cell stimulating hormone, sorry, ICSH है ना. तो ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, और ये Leydig सेल का दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल. ठीक है ना. तो दिस इज ऑल्सो हाउ यू कैन रिमेंबर. नाउ Leydig cell, they start producing testosterone. On the other hand, the FSH, which is known as follicle stimulating hormone, will go to the Sertoli cell. Sertoli cell के पास जाएगा. इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, फॉलिकल एंड सर्टोली, थोड़ा थोड़ा राइम करता है. ठीक है ना, फॉलिकल सर्टोली ऐसे. तो इट विल गो टू द सर्टोली सेल्स एंड इट विल स्टिम्युलेट द सर्टोली सेल, जिसकी वजह से इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग योर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो टेस्टोस्टेरॉन को इकट्ठा करेगा. इट विल कॉन्सेंट्रेट दैट टेस्टोस्टेरॉन, and then testosterone has its function in starting the spermatogenesis. जैसे ही testosterone bind होना शुरू हुआ, उसी हिसाब से spermatogenesis शुरू हो जाएगा, from your spermatogonia to sperms. So this is how the endocrine system is regulated. Leydig cell can synthesize and secrete testicular hormones, which are called androgens. एंड्रोजन्स में से मेन एंड्रोजन जो है दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, है ना. तो हम ये ही एक याद रखेंगे. इसके अलावा भी छोटे मोटे हार्मोन्स होते हैं which are together known as androgens, but for us let us just understand testosterone. टेस्टोस्टेरॉन और क्या चीज करता है? पहली बात तो हमने पढ़ ली कि इट इज स्टिम्युलेटिंग योर स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन इसके अलावा भी इट हैज अदर फंक्शंस like it regulates development, maturation and function of male accessory sex organs as well as male secondary characters. ठीक है ना. वो डेवलपमेंट करवाता है, मैच्योरेशन करवाता है और उसका फंक्शन भी ध्यान रखता है. किस चीज का? मेल एसेसरी ऑर्गन्स का एंड मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स का. सो व्हाट आर दीज मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स? सो यू कैन हैव लिबिडो. लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट. ठीक है. तो लिबिडो, देन ग्रोथ ऑफ लेरिंग्स फॉर डीपर वॉइस. तो आवाज में जो चेंज आ जाती है आफ्टर प्यूबर्टी, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन. Facial and body hair is because of testosterone. There is development of muscles everywhere, that is also because of testosterone.
and the male accessory sex organs, which include the external genitalia, like your penis, and it also includes all the accessory glands as well as ducts. तो उन सब में development है, maturation है, it will all come about because of testosterone. So you can see all of this. Again, they are mentioned here, the same thing which we just discussed. ठीक है? Androgens, they stimulate the process of spermatogenesis. This also we just saw. It acts on the central nervous system and influences male sexual behavior or desire, which is known as libido. Libido is just a fancy term for sexual desire. And these hormones, they produce anabolic effects. Anabolic effects क्यों? क्योंकि आप स्टेरॉइड लेके जैसे मसल वसल बनाते हो ना, वैसे फील आता है. So testosterone is actually an anabolic steroid. ठीक है? तो ये एनाबॉलिज्म बढ़ा देता है, तो आपके मसल का डेवलपमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, एंड विच इज वाई men become more muscular after puberty. Now this is feedback regulation. अभी secrete कैसे होता है, that we already saw, right? From hypothalamus GnRH, anterior pituitary में से FSH और LH जाएगा लेडिक सेल के पास, लेडिक सेल बनाएगा टेस्टोस्टेरॉन. FSH जो है वो जाएगा सर्टोली के पास, सर्टोली बनाएगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. दोनों मिलके दे विल इंक्रीज द स्पर्मेटोजेनेसिस. लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए ना, कोई भी चीज है वो बैलेंस में होनी चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है? तो फॉर बैलेंसिंग या फिर एक प्रॉपर लेवल पे ही स्पर्मेटोजेनेसिस हो, इसके लिए यू हैव रेगुलेशन विच इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक. फीडबैक कौन देता है? नॉर्मली अगर आप कहीं पे खाना वाना खाने जाते हो तो आपको बोलते हैं ना कि सर या मैडम प्लीज आप फीडबैक दो कि कैसा लगा आपको खाना, कैसी लगी आपको सर्विस. तो सेम वे इधर जो टेस्टोस्टेरोन है विच इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस होल पाथवे, ये पूरे पाथवे का फाइनल प्रोडक्ट है, तो इट विल गो एंड गिव अ फीडबैक. ठीक है? तो ये टेस्टोस्टेरोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को मना कर सकता है कि अभी FSH और LH मत बनाओ. It can also go to the hypothalamus and tell the hypothalamus कि अभी GnRH मत बनाओ. ठीक है? We already have a lot of sperms. Second way is Sertoli cells. They also secrete another hormone which is known as inhibin. ठीक है? इसका नाम है inhibin. ये भी थोड़ा याद रख लो. Inhibin जो है, it goes to the anterior pituitary. वो hypothalamus पे नहीं जाएगा. वो pituitary पे जाके बोलेगा कि you do not want more FSH to be secreted. ठीक है? तो इसीलिए उधर से भी FSH और LH का secretion कम हो जाएगा. So this is how by feedback regulation, negative feedback regulation, your spermatogenesis and testosterone production is regulated. चलो, now coming back to the male reproductive system anatomy. हमने अब तक पढ़ लिया कि external male genitalia थोड़ा बहुत देखा. We also saw the testis. टेस्टिस के अंदर we saw seminiferous tubule, उसके अंदर होता हुआ spermatogenesis, sperm का structure, उसका endocrine regulation. Now coming back to the anatomy. अभी हमारे पास sperm बन के ready है. Okay, these are all the lobules that you can see. Focus on the diagram. These are the lobules, जिसके अंदर seminiferous tubules है. ये seminiferous tubules के अंदर sperm बन के ready है. Now what happens? So for carrying this sperm, अभी ये sperm को आगे लेके जाने के लिए you have male sex accessory ducts. ठीक है? तो ये accessory ducts का काम क्या है? They are not synthesizing sperm, but they are delivering the sperm. ठीक है ना? उसको transport करने में help करते हैं. So first you have retetestis. This network here is known as retetestis. इधर सभी lobules जो है वो इकट्ठा होके ये network बनाते हैं, तो it is known as retetestis. रेटाटेस्टिस में से ट्यूब्यूल्स निकलती है 15-20, उनको बोलते हैं इफेरेंट डक्ट्यूल्स, या इसको वास इफरेंशिया बोलेंगे. वास इफरेंशिया जो है वो इकट्ठा होके बनाती है एपिडिडाइमस. सो दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिडिडाइमस. ठीक है ना? एपिडिडाइमस जो है वो एकदम कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, पूरा कॉइलिंग 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 है. फाइन. व्हाई? बिकॉज इट इज ऑल्सो फंक्शनिंग एज स्टोरेज ऑफ स्पर्म. ये स्पर्म को स्टोर करके रखेगा. इतना सारा फोल्डिंग है कि इट हैज अ लॉट ऑफ सरफेस एरिया. तो इफ अ स्पर्म हैज टू exit your retetestis or your testis, right, it will have to pass through a lot of tubes. ठीक है? After this epididymis, ये epididymis जो है
उसमें से निकलता है आपका वास डेफरेंस जो इधर पीछे से जा रहा है. ओके, so this tube is known as vas deferens. Fine. So this is the path of your sperms. They are synthesized in seminiferous tubules. From seminiferous tubules, they will enter the rete testis. After entering the rete testis, ये अभी testis के अंदर ही है. From rete testis, they will enter vas efferentia. Vas efferentia opens into epididymis. ऐसे 15-20 tubules होती है vas efferentia की. So all of them open into epididymis. Epididymis जो है वो एक coiled structure है which will store all of the sperm and it will allow the sperm to mature. अभी ये epididymis जो है it will open into vas deferens. ठीक है ना, तो ये हो गया आपका vas deferens. Now looking at the vas deferens, ये पूरा ये लंबा जो आपको दिख रहा है that is on both sides you have vas deferens. It ascends the abdomen. Ascend का मतलब होता है ऊपर जा रहा है ना, abdomen में ऊपर जा रहा है. It ascends the abdomen and loops over the urinary bladder. ये urinary bladder है तो उसके ऊपर ऐसे loop करके आएगा. It receives a duct from seminal vesicle. अब ये जो seminal vesicle जो है जो इधर आपको दिखाई है, these are in pair, okay, and they are accessory glands. तो ये accessory glands है. Accessory gland जो है seminal vesicle जो है they also open into this common duct जिसको बोलते हैं ejaculatory duct. ठीक है, so it receives a duct from seminal vesicles and opens into the urethra as ejaculatory duct. देखो आप ये देख सकते हो इधर ejaculatory duct. Clear? It continues ahead with urethra. Urethra जो है that is coming from the urinary bladder. ठीक है, तो urinary bladder में से निकलता हुआ urethra और ये seminal vesicle वाला ejaculatory duct and your vas deferens, ये तीनों मिलके बनाएगा आपका urinogenital tract. ठीक है, तो in male the urine pathway मतलब urethra और genital pathway मतलब genital duct, they are not different. वो अलग नहीं होते, वो एक ही होते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट. ठीक है, तो ये हो गया आपका यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट पूरा. The urethra, here this is the bladder and this is the urethra. It originates मतलब उसकी शुरुआत होती है from urinary bladder. It extends through the penis to its external opening known as urethral meatus. ठीक है ना, ये पूरा penis में से जाके open होगा at a place which is known as urethral meatus. The penis is male external genitalia. ये penis जो है वो male external genitalia है which helps in the sexual act. Okay, it helps in insemination. मतलब जो भी आपके sperms है to deposit these sperms in the female reproductive tract, this penis is helpful. It is made up of special tissue that help in erection of the penis and to facilitate insemination. Insemination मतलब deposition of the sperm or specifically deposition of the semen. Fine. So ये penis जो है it has some special tissues which help in its erection. The enlarged end of penis is known as glans penis. The end portion is a little enlarged, okay? And this enlarged portion is known as glans penis. It is covered by a loose covering. It is covered by a loose skin-like structure which is known as foreskin. Fore जहाँ पे भी आए FORE इसका मतलब होता है आगे का, okay? And skin तो you already know. Like four limbs हो गए, four brain हो गया, तो four जहाँ पे भी आए FORE वो before का short form है. Right, so from this also you will be able to remember ये glans penis और glans penis के ऊपर का जो loose covering होता है which is known as foreskin. Right, so this is how if you cut a penis this is how it will look like. ठीक है, उसके ऊपर सबसे ऊपर एक vein होती है mid vein, okay, and underneath अगर आप cross section में देखो तो you have these three tissues. ठीक है, three tissues है. सबसे नीचे जो है that is showing your urethra. इसमें बीच में urethra है which will be carrying urine as well as sperms. Around the urethra you have a tissue known as corpus spongiosum. Spongiosum क्योंकि वो sponge जैसा दिखता है. And on the sides you have corpora cavernosa. Cavern
पता नहीं आपने कभी इंग्लिश में सुना हो, कैवर्न, ओके, CAVERN। तो कैवर्नोसा जो है उसका मतलब भी ऐसे ही होता है, खाली जगह जैसा, ओके। सो दिस इज इन केस ऑफ अ नॉर्मल फ्लैसिड पीनस। फ्लैसिड का मतलब होता है इट इज रिलैक्स्ड, ओके। In case of sexual excitement, yeah, libido, what happens is from this blood vessels or from the vein, the blood starts entering all these sinuses. Okay, ये जो भी tissues थे, corpora cavernosa, तो उसके अंदर blood आके fill up होना शुरू होगा. You can see that here. Okay, as the blood starts filling up, it becomes erect. ठीक है, तो इस हिसाब से इरेक्शन जो है वो होता है, एंड दिस इरेक्शन विल हेल्प इन द सेक्सुअल एक्ट. Now we have discussed all the male reproductive organs. We have also discussed the male accessory ducts. What is remaining is the male accessory glands. Okay, so male accessory glands total 3 there are present. There is a paired seminal vesicle. तो ये जो आपको दिख रहा है, this is a paired seminal vesicle, and here very clearly you can see the ejaculatory duct. Okay, in this diagram. ये जो है this is vas deferens जो पूरा ऊपर से आ रहा है. Then these are the seminal vesicles. Their function is also they store a little bit of sperm and they secrete some fluid. Okay, ये seminal vesicles है, दोनों तरफ एक एक, so ये pair है. They open into this common duct. तो ये common duct जो है between vas deferens and seminal vesicle, that is known as your ejaculatory duct. Ejaculatory duct जो है वो common urethra के साथ it will fuse and form your urinogenital tract. This seminal vesicle, it produces about 65% of your seminal plasma. ठीक है, sperms जो है वो अकेले उसको eject नहीं किया जाता, उसके अलावा उसके साथ liquid होता है, तो वो liquid जो है उसको बोलेंगे seminal plasma. Okay, so seminal plasma जो है that is secreted about 65% from seminal vesicle. It is alkaline in nature. Alkaline इसलिए होता है because the urine is a little bit acidic. तो acidic urine में sperms मर ना जाए इसलिए. And the second thing, the female genital tract is acidic in nature. ठीक है, तो उसमें भी आपके sperms जो है वो मर ना जाए इसलिए the fluid from seminal vesicle is alkaline in nature. इसका pH कुछ 7.3 7.4 के आसपास होता है. Apart from this alkaline fluid, what does it contain? It contains fructose. Fructose जो है it is a monosaccharide, और ये fructose का काम क्या है? It will provide energy to the sperms. ठीक है, so for energy purpose fructose is present. Certain enzymes are present. Prostaglandins जो है वो एक छोटा हार्मोन है, उसका काम क्या होता है? तो काम होता है टू रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स. वो मसल के ऊपर डिपेंड करता है किस चीज का मसल है. ठीक है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली क्या करेगा? ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो है उसको रेडी करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा फॉर एक्सेप्टिंग द स्पर्म्स. ठीक है, तो इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं. देन देर आर सर्टेन क्लॉटिंग प्रोटीन्स. क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो है दे विल क्लॉट द सीमेन. ठीक है, तो सीमेन जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जाके क्लॉट हो जाए, उधर ही पड़ा रहे उसके लिए. And then you have certain nutrients for the sperm. So ये सारी चीजें जो है that is secreted by seminal vesicle. The second gland that you see, ये जो बड़ा वाला gland आपको पीछे दिख रहा है, that is known as prostate gland. Prostate gland जो है that is only single, वो एक ही चीज है. ठीक है ना, उसमें pairing वेयरिंग कुछ नहीं है. This prostate gland it secretes milky fluid containing citric acid. Citric acid जो है वो भी रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है बाय द स्पर्म्स. ठीक है, तो वो भी एक न्यूट्रिएंट है. सो बिकॉज इट इज सिक्रीटिंग सिट्रिक एसिड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन इज अ लिटिल एसिडिक. सेमिनल वेसिकल का एल्कलाइन था, प्रोस्टेट ग्लैंड का एसिडिक है. देन देर आर द थर्ड एसेसरी ग्लैंड्स व्हिच आर नोन एज बल्बो यूरेथ्रल. बल्बो क्योंकि बल्ब जैसा है, यूरेथ्रल यूरेथ्रा के साथ ओपन होता है. ठीक है, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या जिसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं. So what do these bulbourethral glands do? They secrete alkaline mucus. ठीक है, और mucus secrete करते हैं. So this mucus is secreted and mucus helps in lubrication. जो भी sperms आएंगे, जो भी fluid आएगा, उसको easily lubricate करके वो easily बाहर निकल सके, उसके लिए mucus is present.
and so it is for lubrication of the penis. The glands empty their content during ejaculation. जब भी ejaculation होगा तभी everything will be emptied into this common urethra. So there we end today's lecture, and this was all about the male reproductive system. Compared to the female reproductive system, it is quite small in size. छोटा है, समझने के लिए सिर्फ कुछ ही चीज़ें हैं, and I have tried to cover almost everything so simply कि आपको lecture में से ही याद रह जाए, ठीक है ना? तो from the next class we will be talking about the female reproductive system. A few points to add in the male reproductive system is कि spermatogenesis जो process है that remains active till the end of life. ठीक है ना, वो मेल में the reproductive cycle remains active till the end of life. तो जब ये puberty से शुरुआत हो जाएगी तो end तक रहेगा. And the reason is because spermatogonia can undergo mitosis. ये एक specific क्या बोल सकते हैं difference है between male and female reproductive system. We will study that in female reproductive system the oogonia, it cannot undergo mitosis. oogonia का mitosis नहीं होता है, so it is always limited, और इसीलिए females में the fertile age is only a little bit, okay, वो पूरी lifetime के लिए नहीं चलता. So the homework only which I could suggest you is write down the functions of LH and FSH. तो ऐसा difference जैसे मैंने आपको सिखाया था, तो make a table where you write down the difference between LH and FSH. Second thing, write down the difference between Sertoli cells and Leydig cell. लोग इधर ही गलती कर देते हैं, छोटी सी बात है. So it is important. So write down that much difference. और इतना कुछ कर लोगे तो हो जाएगा, है ना? It is quite simple. चलो. So see you next time.